Okay, so Q after Q is equal to MC delta T, let's talk about few definitions and definition of standard enthalpy changes. The first definition, as I said, we have to do some definition, just as standard enthalpy change of reaction, combustion, formation and neutralization. सबसे पहले हम define करेंगे the term standard enthalpy change. The standard enthalpy change is basically represented by delta H, which is the enthalpy change, and the standard sign is this one. You have to place this sign. The sign on the top, which is this one, is the sign for standard condition. This is a sign for standard conditions. And there are three standard conditions, and you all know that temperature 298 Kelvin, which is 25 degrees Celsius, pressure 1 atm atmospheric pressure, which is 101 kilopascal, is the same thing. Or the third and very important point, all substance must be in their standard physical state. Means if you have if you have carbon, it must be in a solid form. If you have oxygen, it must be in a gas form. All substances must be in their standard physical state. Any enthalpy which is measured under these three conditions is called standard enthalpy change. अगर आपने इन conditions का ख्याल रखा है, the enthalpy change is called standard enthalpy change. ठीक है? And this is a sign. It looks like a circle with a cross. आप इस तरह का sign बना सकते हैं. Whenever we have done this sign before as well. कहाँ पे किया था? Standard enthalpy change of first ionization में. ठीक है? And let's move towards the definition. The first definition is standard enthalpy change of reaction. And it is represented by delta H sign and R is for reaction. So this is the first definition, delta HR. Now the definition, the energy change or enthalpy change associated when given amount of reactants reacts together to form product under a standard condition. It's very rare that they ask about the definition of delta HR, which is the standard enthalpy change of reaction. बहुत rare है कि इसकी definition पूछी जाए. ठीक है? As an example, you can write any chemical reaction like NaOH, aqueous 2 moles of NaOH reacting with H2SO4, aqueous forming Na2SO4, aqueous plus 2H2O liquid. Okay? And the enthalpy change associated is called delta HR, standard enthalpy change of a reaction. Okay? Any enthalpy change when a given amount of reactants react together to form product under standard condition.
मीन्स जनरली इस दुनिया के जितने भी केमिकल रिएक्शन है, वी कॉल इट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. Okay, and this reaction could be endothermic, it could be exothermic. That's why I said that the enthalpy change associated. मैंने ये नहीं कहा the energy released or energy absorbed. We said that enthalpy change or energy change associated. ठीक है? Now moving towards a more specific definition, which is the definition for the standard enthalpy change of formation. Standard enthalpy change of formation. सिंबल क्या होना चाहिए? डेल्टा एच स्टैंडर्ड और फॉर्मेशन का एफ. ठीक है, रिएक्शन का आर, फॉर्मेशन फॉर एफ, डेल्टा एच एफ, which is the standard enthalpy change of formation. Now write down the definition first. The enthalpy change associated when 1 mole of a compound is formed from its elements in standard state under standard condition. ठीक है बेटा, so this is the definition for the standard enthalpy change of formation. Now I'll spend some time on the formation definition. We practice how to write down the equation for the formation of any given compound. देखिए यहाँ पर एक बात आपको बहुत हाईलाइट करके सीखनी है, which is you must have 1 mole of a compound on the product side, है ना? ऐसे ही है. And it must be made from their elements. As an example, if I ask you to write down the equation for the enthalpy change of formation for carbon dioxide gas, ठीक है? अब जरा बोर्ड पे देखिए गौर से, and then you can write it down later on. ठीक है, इस नोटेशन को समझिए. दिस नोटेशन सेज डेल्टा एच एफ यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड. मींस यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. So it's very easy. Write down 1 mole of carbon dioxide gas on the product side. Make an arrow and write down the elements on the left hand side. Elements कौन-कौन से होंगे इसमें? Carbon plus oxygen. Carbon, oxygen is in a O2 form. Carbon is solid and oxygen is gas. This is the equation. Okay. Write down 1 mole of a compound on the right hand side. Left side pe write down the element, but make sure that you balance only the left side. We are bound to place 1 mole here. यहाँ आप बैलेंसिंग के लिए कोई और नंबर नहीं लगा सकते. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपको फ्रैक्शंस लगा के इसे बैलेंस करना पड़ेगा. नाउ if I ask you to write down equation for the formation of H2O liquid, वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए. ट्राई करें. Write down the equation for the formation of H2O liquid. Now H2O 1 mole liquid form, right hand side. ठीक है ना? Then write an arrow. Elements involved are hydrogen H2 plus O2. Both are in a gaseous form. And for balancing क्या करना पड़ेगा?
ऑक्सीजन के साथ हाफ प्लेस करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O. Very simple, but it's important. If I ask you, write down the equation for the formation of SO2 gas. Can you do it for me? Equation for the formation of SO2 gas. Yes, SO2 must be in a gas form made from sulfur plus O2 gas. This equation is already balanced, just write solid with the sulfur. ठीक है? You remember this physical state of sulfur, phosphorus? याद है इन सबकी? Germanium, vanadium, chromium. कैसे? हाँ, I think यार अब मैंने आपको बताया था एक दफा, है ना? There are two liquids, mercury and bromine. Gases common है nitrogen, hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine, and noble gases, and rest are solids. ठीक है? Okay, जी. If I ask you to write down another formation equation, because you must be able to write down the equation for the formation of any given molecule. Can you do it for ethanoic acid? Formation equation for ethanoic acid? Good sign. Is it in liquid form? So CH3COOH liquid, 1 mole on the right hand side, elements on the left hand side, which are carbon, oxygen, and hydrogen. Carbon solid, oxygen gas, hydrogen gas. Balancing के लिए 2 carbons, so place 2 here. 4 hydrogen, so place 2 here. It becomes 4 hydrogen. Oxygen 2, it's already balanced. देखिए, just have a look. This is the equation for the standard enthalpy change of formation of CH3COOH. Delta H formation of N2H4, and this is liquid as well. And this molecule is called hydrazine. Hydrazine. N2H4 liquid. Can you write down the equation for the formation of this one? N2 plus 2H2, and both are gases. ठीक है? So this is the equation for the formation of N2H4, which is hydrazine. सही है जी? तो I'm sure if I give you any molecule, no matter you know that molecule and you have no idea what molecule it is, you can write down the equation for the formation. सही है? दूसरी एक important बात नोट करके यहाँ लिखेंगे. Enthalpy change of formation of elements, ये तो compounds है ना सारे, is always 0. Uncombined element, nitrogen, hydrogen, oxygen, इन सब की formation की value क्या होगी? 0. So delta H formation of element is always 0. यानी अगर मैं आपसे कहूं जनाब delta H formation of N2 बताओ कितनी होगी, आप बोलेंगे 0. It's an element. Okay? ये सिर्फ किसके लिए होती है? कंपाउंड के लिए. Look at the definition again. It says the enthalpy change associated when 1 mole of a compound is formed from elements. Okay, it's called enthalpy change of formation. So for elements, it is always
जीरो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, ठीक है, इट्स ऑलवेज जीरो। फॉर्मेशन की वैल्यू इन सब की जीरो होती है। आई एम श्योर दैट दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। So this is very important because in solving the questions they never provide you with the formation value of elements, कभी भी नहीं देंगे आपको। तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरीके से इन चीजों को रियलाइज करते हो। क्लियर है, डन है। किसी भी इक्वेशन की फॉर्मेशन, किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन की इक्वेशन आप आराम से लिख लेंगे, आई एम श्योर। नाउ इट सेज, look at the question. It says define with the aid of diagram, including the state symbol, the standard enthalpy change of formation of carbon dioxide. Same thing which we did right now. Carbon solid plus O2 gas forming carbon dioxide gas. And how you define it? You say the enthalpy change associated when 1 mole of carbon dioxide gas is formed from carbon and oxygen. लिख दीजिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है, रिएक्टेंट के जितने भी मोल्स हो मेंशन करना जरूरी है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। नाउ नेक्स्ट वन, इज इट क्लियर? मुझे बताओ, लेट्स शैल आई मूव फॉरवर्ड। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड enthalpy change of combustion, which is delta H C combustion, ठीक है। Right, let's write down the definition first. The enthalpy change associated when 1 mole of a substance, means it could be compound, it could be element, is burnt in excess of oxygen to form its combustion product under a standard condition. ठीक है बेटा, so this is the definition for the standard enthalpy change of combustion. Make sure कि आपको ये बात याद हो कि 1 mole of a compound or of a substance, element or a compound burned in an excess of oxygen to give its combustion product. ठीक है, लिख ली डेफिनेशन। एग्जाम्पल, देखिए यहां पर लेट्स सपोज इफ आई राइट डाउन द कंबस्शन ऑफ कार्बन, सो 1 मोल ऑफ कार्बन इन अ सॉलिड फॉर्म किसके साथ रिएक्ट करेगा? यस, ऑक्सीजन इन अ गैस फॉर्म to give its combustion product, and carbon always give carbon dioxide gas as a combustion product. ठीक है, this is called delta H C combustion of carbon solid. ठीक है, enthalpy change of combustion of carbon. If I ask you to write down the equation for the combustion of hydrogen gas, तो आप लिखेंगे H2 plus half O2 gas forming H2O। वैसे तो गैस होता है लेकिन आप यहां लिक्विड लिख सकते हैं। डेल्टा H combustion of
हाइड्रोजन। ठीक है, मेक श्योर कि आपको ये बात याद रहे कि एनीथिंग दैट रिएक्ट इन कंबस्शन, जो भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है उसका 1 मोल होना जरूरी है। दैट्स अ पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन। ठीक है, इफ इट नॉट बी 1 मोल देन फिर आपके पास आंसर सही नहीं आएगा। कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन फॉर सल्फर सॉलिड? ठीक है ना, डन। अच्छा, एक की नोट याद रखिएगा बेटा यहां पर। देखिए, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन फ्यू एलिमेंट्स। वैसे मैंने ऊपर ये बात लिख दी है, एग्जाम्पल मैंने जान के यही दी है। और उन एलिमेंट्स की कंबर्शन प्रोडक्ट हम लिस्ट डाउन कर देते हैं। यानी इफ यू हैव कार्बन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो CH4 हो, चाहे वो CH3COOH, whenever you have a carbon present on the reactant side, one of the combustion product is always carbon dioxide gas. ठीक है, but no matter whatever the form of carbon, whenever you have hydrogen in any form, one of the combustion product must be water because of hydrogen. क्योंकि after combustion, the hydrogen is getting converted to water. If you have nitrogen, one of the combustion product is always NO2. If you have sulfur, one of the combustion product always sulfur dioxide. Okay? So now you can predict the combustion product of any element by knowing these combustion product. Okay, is it clear? So if I give you a molecule, any molecule, or if I ask you, give me the combustion product, तो आप उसे आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे, कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर डेल्टा H combustion of CH4? CH4, and it's a standard enthalpy change of combustion. That's what I'm asking for. So you have to write 1 mole of CH4. It's in a gas form. It's a methane gas reacting with oxygen, forming. What should be the combustion product? क्या प्रोडक्ट्स होंगी? Yes, because of carbon dioxide, because of hydrogen, water. So CO2 यहाँ 2 लगाएंगे and 2 to the 4 यहाँ 2 लगाएंगे. This equation is balanced. ठीक है बेटा. If I ask you to write down the equation for the standard enthalpy change combustion of CH3 NH2, can you try? CH3 NH2. So you have to write down CH3 NH2 amines, well, I can write a liquid, plus O2 gas
व्हाट शुड बी द कंबशन प्रोडक्ट? कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की वजह से बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन की वजह से वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इसकी, है ना? ना आई नो इट्स की बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, खुद कर लेना, मैं भी नहीं कर रहा। ऑक्सीजन कितने 5 है ना, यहाँ 5/2 लगा दीजिए, 2.5। हाइड्रोजन इज 5 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना? वी कैन नॉट प्लेस एनी नंबर हेयर, यहाँ पे हमें 1 मोल ही रखना ही हमारी मजबूरी है। तो वी कैन प्लेस फ्रैक्शन ऑन द प्रोडक्ट साइड। So I place 5/2 with H2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन कैसे होंगे? 2 to the 4, 4 + 2.5। नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ फ्रैक्शन लगा दीजिए। जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 6.5 है ना, है ना? 6.5 लगाने के लिए O2 के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हम्म, सोचो सोचो सोचो। नहीं, 13/4 अगर मैं लगा दूं, × 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 13/2 6.5, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी सी, आई नो कि इट्स बैलेंसिंग इज स्लाइटली ट्रबलमेटिक। 13/4 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13/2 यानी 6.5 बचेगा आपके पास। डोंट वरी अबाउट द बैलेंसिंग, दे नेवर आस्क दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। एक और इंपॉर्टेंट नोट इन टर्म्स ऑफ कंबशन, as I said, the combustion product of carbon is carbon dioxide, the combustion product of hydrogen is water, and the combustion product of sulfur is sulfur dioxide. So it means that enthalpy change of combustion of water, enthalpy change of combustion of carbon dioxide, enthalpy change of combustion of sulfur dioxide, and most importantly, enthalpy change of combustion of oxygen क्या होगी? This is 0. कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली द कंबस्शन प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो कंबस्शन की प्रोडक्ट है, इनकी फर्दर कंबस्शन नहीं हो सकती। और ऑक्सीजन यूजुअली हेल्प्स इन कंबस्शन, इट्स अ रिएक्टेंट ऑफ कंबस्शन। ऑक्सीजन की अपनी कंबस्शन नहीं होती। देखो, हाइड्रोजन को कंबस्ट करोगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगी? प्रोडक्ट इज H2O। इसका मतलब H2O फर्दर कंबस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि द कंबर्शन ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स इज ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए कि इन अ डाटा दे गिव यू एवरीथिंग बट दे won't provide you with the conversion value of these. So the formation of elements is 0 and the conversion of carbon dioxide, water, sulfur dioxide and oxygen is 0। बस ये दो बातें याद रखने वाली है। ठीक है, H2O फर्दर कंबस्ट नहीं हो सकता। N NO2, हाँ NO2 भी यहाँ इस लिस्ट में होगा। NO2 भी, देखिए जो हमने राइट साइड पे कंबशन प्रोडक्ट लिखी है ना, देखिए whatever the combustion product we have written on the right hand side, it's a proof that these cannot be further combusted। वरना हमें ये क्यों मिलता, वो प्रोडक्ट मिलती जिसमें ये कंबस्ट होके जाते। ठीक है, so this is all about combustion। Let's talk about another definition, and that's the last definition before like 2020 I think there are lots of definition, but now there are very few definition in our syllabus, which is the standard enthalpy change of neutralization। Standard enthalpy change of neutralization, delta H standard N, standard enthalpy change of neutralization। What is the neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन क्या है?
मुश्किल बात है, let's make it as simple. Can I say that neutralization is the reaction of an acid and a base to form salt and water? है ना? Neutralization. So I'm giving, हाँ हाँ सेम बिल्कुल उस पर ही बात करेंगे. That's basically neutralization. पहले हम थोड़ी सी न्यूट्रलाइजेशन पे बात कर लेते हैं, फिर हमें डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी. ओके देखिए, लेट्स सपोज यू हैव HCl plus NaOH. All these are the aqueous solution. Sodium chloride plus H2O. ठीक है? Now this one H2SO4 plus 2 NaOH forming Na2SO4 plus 2 H2O. Aqueous, aqueous, aqueous and liquid. दोनों इक्वेशंस में आई हैव यूज्ड डिफरेंट एसिड्स and I've used different alkalis and I'm getting different salt. This is something which I'm getting common in both. क्या चीज है ये? Water. No matter आप जो भी alkali लें, no matter आप जो भी acid लें, salt कुछ भी different salt बनेंगे, but the common factor is basically the formation of water. And if you know, and if you remember the ionic equation for neutralization from O levels, हाँ भाई याद है? वेरी सिंपल, H पॉजिटिव, यस, और इसमें प्रोडक्ट क्या बनती है? H2O. Means the neutralization is technically or basically is the formation of water. Neutralization is technically the formation of water. So अगर आपके पास 1 मोल वाटर बन रहा हो बट एलिमेंट से ना बन रहा हो बल्कि किससे बन रहा हो? अपने एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड एल्कली बन रहा हो तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है? सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. The enthalpy change associated when 1 mole of water is formed as a result of a reaction between acid and alkali under standard conditions. ठीक है? This is basically called a standard enthalpy change of neutralization. The reaction, the enthalpy change when 1 mole of a water is formed as a result of a reaction between acid and alkali. As an example, I'm going to give you the same example. HCl plus NaOH forming NaCl plus H2O. कितने मोल वाटर के बन रहे हैं बेटा? 1 mole as a result of a reaction between acid and alkali है. So this is called delta H neutralization. ठीक है? Now the second equation H2SO4
2NaOH forming Na2SO4 plus 2H2O. क्या ये भी न्यूट्रलाइजेशन है? हाँ, नहीं, बिकॉज देयर इज नो 1 mole ऑफ वाटर इज फॉर्म. बाकी चीजें ठीक है ना? So can I say that this is basically delta HR? This is delta H. ये enthalpy change of reaction. It's not neutralization. But as all other things, यानी acid भी है, alkali भी है, salt भी बन रहा है, सिर्फ water के 2 moles बन रहे हैं ना? तो हमने क्या किया? Can we divide it by 2 to get it delta H N? क्या हम इसे 2 से divide करके neutralization कह सकते हैं? है ना? क्योंकि बाकी चीजें ठीक थी. अगर बाकी चीजें भी डिफरेंट होती तो हम ये बात नहीं कह सकते थे. We have acid, we have alkali forming salt, forming water, but water के 2 moles बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको divided by 2 किया and we get the enthalpy change of neutralization. हाँ, अगर acid नहीं होता, alkali नहीं होता, तो मैं ये बात नहीं कह सकता था. क्या मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट समझा पाया दोबारा से? ठीक है, you know the concept of neutralization reaction, but now we are relating it with the enthalpy change. Done. ये बात याद रखिएगा कि if you have acid and alkali reacting forming salt and water, but not 1 mole of water is formed, that's not neutralization, but you can convert it into a neutralization. ठीक है? Done. Shall I move forward? एक और बात नोट करते हैं यहाँ पर. And it is very important. देखिए जनाब, मुझे बताइए कि combustion of hydrogen की इक्वेशन क्या थी? H2 plus half O2 forming H2O. This is basically delta H, combustion of हाइड्रोजन. अब जरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन बताइए. फॉर्मेशन ऑफ H2O, इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर यही है. कैन आई से दैट द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ H2O is the same thing because it involves the same chemical equation. ठीक है, true. And it is very important. Why? Because they always create a confusion. They give you the data of combustion, but they give the formation of water. Make sure कि आप इसमें confused ना हो. आपको पता होना चाहिए it's the same thing. And this is applicable on this as well. Carbon plus O2 forming carbon dioxide gas. So can I say that the enthalpy change of combustion of carbon is basically the formation of, बोले भाई, carbon dioxide. Can you give me another equation? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता है कुछ. सल्फर डाइऑक्साइड. यस, सल्फर solid plus O2 gas forming sulfur dioxide gas. So conversion of sulfur, and same applies for nitrogen as well. है सही ना? Combustion of nitrogen is the formation of nitrogen dioxide. So here sulfur की example है, तो sulfur dioxide. बेटा ये बहुत बहुत समझ लें कि कीमती पार्ट है. Clear? So you make sure that you remember that these combustions are basically the formation of their respective compounds. And they always confuse you in this formation and combustion wale part mein. Done? देखिए, now up till now we have covered 3 definitions आज की class में. We started with the standard condition. Now you should memorize the standard condition: temperature 298 Kelvin, pressure 1 atm. All substance must be in their standard physical state. Standard enthalpy change of a reaction delta HR. Enthalpy change associated when a given amount of reactants react together to form product under standard condition.
इन जनरल जितनी भी आपने आगे डेफिनेशंस पढ़ी हैं या जिंदगी में जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जनरली ऑल दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो दे नेवर आस्क यू अबाउट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, the enthalpy change associated when 1 mole of a compound is formed from its element under standard conditions, ठीक है। And you should be able to write down the equation for the formation of any given compound, ठीक है। चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे आप उस कंपाउंड को जानते हो या ना जानते हो, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। The enthalpy change of formation of all uncombined element, naturally occurring element, those are present in a periodic table, is zero. चाहे वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, whatever it is, formation is always for the compounds. And a standard enthalpy change of combustion when 1 mole of a substance, element ho, compound ho, jo bhi ho, is burnt in an excess of oxygen to give its combustion product. Here the key point, whenever you have carbon in any form, the combustion product is always carbon dioxide, sulfur hai to sulfur dioxide, nitrogen hai to nitrogen dioxide, and hydrogen hai to water hogi, ठीक है। And then combustion of CH4, yes, we can see carbon and a hydrogen, so the product is carbon dioxide and a water. In the second example, I can see carbon, hydrogen, and nitrogen. So CO2, H2O, and NO2 is the combustion product. Combustion of water nahi hoti, carbon dioxide nahi hoti, sulfur dioxide and oxygen nahi hoti. ठीक है, क्योंकि these are the combustion product and oxygen is basically one of the reactant of combustion. Neutralization, yes, neutralization is the reaction in which acid and base reacts together to form salt and water. तो water की formation से relate किया और हमने कहा when 1 mole of water is formed but not from its element, element से बनेगा तो वो तो formation हो जाएगी, formed from as a result of a reaction between acid and alkali. That's basically called neutralization. Second equation, sulfuric acid में everything was okay, acid भी था, alkali भी था, salt भी था, water भी बन रहा था, but we have 2 moles of water formed, तो हमने कहा ये neutralization नहीं है। इसको divide by 2 कर देंगे तो जो value आएगी, that's basically the neutralization. And the most important part, the combustion of hydrogen and the formation of H2O is the same thing because the same equation. अच्छा, exam में question आता है, they usually ask why, like explain why the combustion of hydrogen is also called the formation of water. तो आप क्या लिखेंगे? In both, 1 mole of water is formed from 1 mole of hydrogen reacting with excess of oxygen. In both, 1 mole of water is formed as a result of reaction of hydrogen gas or burned in excess of oxygen. एक बहुत लास्ट बात, डेल्टा एच आर, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच सी, डेल्टा एच एन, हमने यही इंथैल्पी चेंजेस पढ़े ना बेटा। सो डेल्टा एच आर कुड बी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक बोथ। ये तो जनरल रिएक्शन है ना, इस दुनिया का कोई भी रिएक्शन है या तो वो एंडोथर्मिक होगा और आइदर इट इज एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन अगेन कुड बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, combustion is always exothermic and neutralization is always exothermic, ठीक है, clear? So these two reactions are always exothermic and these could be endo or exo both. Done it. Let's see something here. Okay, it says combustion की equation लिख के दिखाइए for DME, which is dimethyl ether, CH3 OCH3. And if I have to write down the equation for combustion, क्या करूं? Reacting with oxygen, forming what should be the combustion product? Yes, carbon dioxide and H2O. Now balance this equation: 2 carbon, so 2 carbon dioxide, 6 hydrogen, 3 water molecule, and 3 plus 4 7, और एक यहाँ आ गया तो यहाँ 3 लगा, ठीक है।
इट इज बैलेंस्ड। एक ऑक्सीजन हमारे पास OO CH3O में था, इसलिए 7 के बजाय हमने 6 से बैलेंस किया है इसे। Definition again defined with the aid of diagram and state symbol is standard enthalpy change of combustion for DME. अब बेहतर ये कि आप DME के लिए explain कर दें. When 1 mole of DME react with excess of oxygen to form carbon dioxide and water under standard condition. And you can see how many marks for this definition and equation? कितने? 3 marks. और how many marks? Excuse me. 3 marks. Formation की definition, and then you can give the equation of the formation. So this is very frequent. They frequently ask the definition and standard enthalpy change of formation definition. What is the meant by? ठीक है. Definition आप लिख देंगे. Formation of water की equation लिखनी है, लिख देंगे. अभी लिख कर आए थोड़ी देर पहले. ऐसे ही ना? Can you do part 1 and 2? A part 1 and 2 हो जाएगा. Copy paste the definition. Write down the equation for the formation of H2O. Third part देखिए अभी जो मैंने बताया. Explain why the formation of water is identical to the standard enthalpy change of combustion of hydrogen. दोनों में 1 mole of water is formed as a result of a reaction of hydrogen with the excess of oxygen. ठीक है? Write down and Q is equal to MC delta T. We have done this one. So again formation की definition पूछी है. Can you write down the equation for the formation of this ketene molecule? Formation की equation लिख सकते हैं इसकी? तो हमने, चलो मैं लिख देता हूं. CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट साइड पे लिखा. एलिमेंट क्या क्या होंगे? मेक श्योर कि आप स्टैंडर्ड स्टेट्स का ख्याल रखें. ठीक है, ये आई डोंट नो इट्स गैस और नॉट. कंपाउंड की हमें इतने बॉर्डर नहीं होती. सो 2 कार्बन रिप्लेस 2 हियर, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है. ऑक्सीजन के साथ सिर्फ हाफ लगाना पड़ेगा. एम आई राइट? ठीक है. अब मुझे पता है एक्सपर्ट होगा इक्वेशन लिखने में कंबस्शन की, फॉर्मेशन की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी पेपर 2 में फ्रीक्वेंटली आस्किंग अबाउट दी ओके. There is one MCQ, I think. Okay. Which equation represents enthalpy change of formation? Question number 13. Formation. When 1 mole of a compound is formed from its element under standard conditions. So which equation represents the formation? जहां right side पे 1 mole हो कंपाउंड का और लेफ्ट साइड पे एलिमेंट हो. इट could not be an A because A में लेफ्ट साइड पे कंपाउंड आ गया है ना. इट could not be B because B में 2 moles आ गए. इट कैन नॉट बी C because C में एलिमेंट नहीं है रिएक्टिव. D is the right answer. You can see potassium is an element, Mn magnesium is an element, oxygen is an element, and KMnO4 is a 1 mole of a compound. ठीक है. So that's how you're going to pick the equation if they're asking about any enthalpy change. एक बस last question है, if I remember the question. Okay, okay. Formation of C2H5OH. Which equation represents the formation of C2H5OH? C2H5OH is a liquid. So A, C तो गलत हो गया. It's an alcohol. Ethanol, alcohols liquid होते हैं. ठीक है. D is wrong because hydrogen is wrong here. Either A or a B. A is wrong because carbon is, so B is the right answer. ठीक है ना. बहुत गौर से आपको पिक करना पड़ेगा and that's how you can
instant enthalpy change of formation of carbon dioxide. नहीं किसी की भी. A seems to be the right option, but this is wrong because this is wrong. This is wrong because oxygen is always O2. है ना? And this is the formation of carbon monoxide. ठीक है? This is the formation of carbon monoxide. So B is the right option for this one. Make sure that you revise it thoroughly. अच्छे तरीके से उसे pick करें सही answers को. Still I'm searching for that particular question. हाँ, this is the one. Something about the neutralization reaction. Acid and base forming salt and water. Okay, the enthalpy change of reaction 1, which is this one, is minus 114 kilojoules per mole. What is the enthalpy change for the reaction 2, which is this one? What से देखें पहले reaction 1, reaction 2, फिर उसके बाद बताएं enthalpy change में क्या फर्क होगा. देखें, can I say that both reactions are 2 times of enthalpy change of neutralization? है ना? In both you have different acid, different alkali forming salt and 2 moles of water. So you can see both reaction type are exactly same and same amount of water is formed, so you get the same value. सही है? Both are neutralization, but like 2 times of neutralization in which acid and alkali reacts together. तो अगर इनकी ionic equation बनाएंगे तो क्या बनेगी? 2H positive plus 2OH negative forming 2H2O. है ना? If the ionic equation is same, it means that the enthalpy value is same as well. हाँ, नहीं ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, जर्नल रिएक्शन है, बट एज द टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेम. ठीक है ना? टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट दिस एंथैल्पी चेंज फॉर श्योर ये 114 इट्स नॉट कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हाँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो न्यूट्रलाइजेशन बन जाएगी. So that's how you're keeping this. So this is all done from the definition side. Next is enthalpy change of like Hess's law and calculation. Inshallah, next class may we do it.